and welcome to today's event. Today's event is how to face the communal situation in today's India. And there are two so well-known personalities in India who could be the best person, I guess, who can speak on this issue. And they are so fully engaged on ground. Dr. Sandeep Pandey, a well-known social activist, a very respected professor, Ramon Magsaysay Awardee. He is a professor of engineering at almost every IIT. He has been there. And he is my fellow BHU student. I did PhD and he did his IIT from there. And he's a close friend. And the second speaker is Faisal Khan sahab. He revived his biggest contribution, I'll say, is that he revived Khudai Khidmatgaar. Ghafar Khan's party. And also he is much involved in Sabka Ghar, a social activity center, as well as a network of all people who can, marginalized people. He has also established Bibi, Amtusalam Empowerment Center in Haryana. He is a well-known figure. He takes certain very dangerous routes also sometimes. He became very famous when he prayed namaz in a temple and they charged him. There is a case, I guess. But anyway, his issue is a Hindu-Muslim, friendship, and he is well known in that respect. So I will invite Faisal Khan sahab first about his activities and what he does, but basically what is India going through and आप कैसे उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं. फैसल खान साहब, feel free in जो भी language आप use करें. Please, welcome. सर बहुत शुक्रिया आपका, और इस आपके ये जो प्रोग्राम है इसमें आपने मुझे बोलने के लिए कहा. लेकिन ये इस वक्त जो सिचुएशन है आप सबको, हम सबको पता है. तो मैं अब और मैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार इस पे चर्चाएं हो रही हैं. मुझे लगता है पिछले 3 महीने में करीब 40 चर्चाओं में मैं हिस्सेदार बना, कुछ में स्पीकर की हैसियत से और कुछ में पार्टिसिपेंट की हैसियत से और कुछ में और भी थोड़ा ऑर्गेनाइजर की हैसियत से. लेकिन आखिर में जो आके बात आई वो यही आई कि हमें, मतलब कोई रॉकेट साइंस बनाने जैसी बात नहीं आई. आखिरी में जो उन 40 बैठकों का अगर आप मुझसे निचोड़ पूछेंगे जो पिछले 4-5 महीने में हुई हैं इसी मुद्दे को लेके, जिस मुद्दे को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो यही था कि हमें लोगों तक पहुंचना है. हर मीटिंग में, मतलब हमें अपनी रीच बढ़ानी है, हमें लोगों तक पहुंचना है और लोगों तक जाके इस बात को रखना है. क्योंकि कोई अभी तक हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि हम लोगों को खिला दें और वो रातों रात वहां का माहौल बदल जाए और लोगों में विश्वास पैदा हो जाए. तो मुझे लगता है कि मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ. अभी एक नौजवानों का ग्रुप आया दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेजेस का, मुझसे ऑनलाइन. उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते. तो मैंने कहा आप देखिए, जितना लोग नफरत फैला रहे, वो ग्रुप्स हैं, वो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप ये देखिए कि वो 3 बड़ी बातें क्या करते हैं. मतलब कौन से 3 बिंदु हैं, कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिन पे उनका सबसे ज्यादा जोर रहता है और जिसको वो मतलब जिसके खिलाफ बोलते हैं. तो उन बच्चों ने मुझे 1 हफ्ते के बाद बताया कि पहली चीज तो सांझी विरासत है. सांझी विरासत का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाना, उसको गलत बतलाना, उसको एक झूठ और एक फरेब बताना. और दूसरी चीज महात्मा गांधी. और तीसरा उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, वो यहाँ मैं नहीं लूंगा. तो 2 चीजें, एक तो उन्होंने कहा कि सांझी विरासत से वो लोग बहुत घबराते हैं और बहुत उससे डरते हैं, और दूसरा महात्मा गांधी से. आप देख लीजिए कि एक आदमी है हिंदुस्तान में जिसको हर साल मारा जाता है. 30 जनवरी को अलीगढ़ में एक कोई
साध्वी हैं या कोई और है, मैं उनको नहीं जानता, साधु तो ऐसा आदमी को नहीं कहना चाहिए, वो हर साल गांधी जी की शहादत के दिन उनको गोली मारती हैं और वो अपने को नाथूराम गोडसे का भक्त बतलाती हैं, और हर साल गांधी जी को की हत्या करके उनकी तस्वीर में खून वगैरह लगा के वो नकली और पूरा वो करती हैं। तो उस गांधी का नाम भी उन्होंने लिया कि इन दो तीन चीजें जो है इनसे सबसे ज्यादा वो लोग इनकी मुखालिफत करते हैं। तो और यही रास्ता है, मतलब मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना। और ये जो नफरत फैलाने वाले हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरते हैं तो ये मोहब्बत से डरते हैं, मोहब्बत फैलाने से डरते हैं, मोहब्बत की बात करने से डरते हैं, मोहब्बत की चीजें और मोहब्बत के जो सिंबल हैं उनसे भी डरते हैं। तो ये बात को हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होगा। और ये कोई बहुत ही कोई इमोशनल बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप कहें कि अंधेरा है और इसको दूर करना है तो आप कहेंगे रोशनी चाहिए। आप कहेंगे एक आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। एक जब समाज नफरत से भर जाता है तो सिर्फ उसको रास्ता है कि उसमें मोहब्बत को बढ़ाया जाए। फैसल मोहब्बत के साहब, बढ़ाने। आप कंटिन्यूअस हिल रहा आपका, जरा सा अच्छा, सॉरी सॉरी कुछ ऐसा करें कि आपकी अच्छा एनर्जी जो है स्टेशनरी रहे, हिले ना ज्यादा। सॉरी सॉरी तो मोहब्बत को ही बढ़ाने से मुझे लगता है कि ये इस मसले का हल है। और नफरत का मुकाबला करने के लिए जो जो सबसे मजबूत कोई अगर रणनीति है जो गांधी जी के कामों से भी हमें पता चलती है, वो यही है कि हम लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाकी जितने काम हैं, गांधी जी ने भी कहा था कि मेरी जिंदगी के 14-15 काम हैं जिनमें मैंने अपना वक्त लगाया है, लेकिन कोई काम भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं मर सकता हूँ। मैंने हरिजन सेवा का काम भी किया है, मैंने और रचनात्मक काम भी, कंस्ट्रक्टिव वर्क जिनको वो कहते थे वो किए हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसा काम है वो कहते थे जिसके लिए मैं अगर जान भी देना पड़े तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, और वो कम्युनल हार्मोनी का काम है। वो हिंदू मुस्लिम एकता या कौमी एकता जिसको वो कहते थे, उसका काम है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। बाकी सामाजिक कामों की तरह ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको दो वो लोग जिनका आपस का विश्वास खत्म हो गया है, जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, उनको आपको मिलाना है। जो एक दूसरे के वजूद से नफरत करने लगे हैं, जो एक दूसरे को बिल्कुल जरा सा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उनके बीच आपको दोस्ती बिठानी है। तो और जब हम गांधी जी का नवाखाली का प्रोग्राम देखते हैं, अब इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में जाऊं और उसके वो किस्से यहाँ नकल करूं, लेकिन गांधी जी ने नवाखाली में जिस तरह से दोनों को एक किया था और एक दूसरे से मिलाया था, वो लोग जो कुछ दिन पहले एक दूसरे के घरों में आग लगा रहे थे, और वही लोग थे जो एक दूसरे के घरों में जाके उनको दिलासे दे रहे थे। तो ये काम जो इस वक्त समाज में नफरत फैली है हमारी, देखिए पॉलिटिकल जो जिनको पॉलिटिकल चेंज लाना है वो उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो चाहे वो सबका घर के रास्ते से हो, चाहे वो मानव एकता संवाद के रास्ते से हो, चाहे यूथ डायलॉग के रास्ते से हो, हमारी दिन रात की कोशिश ये है कि किसी तरह से एक दूसरे के साथ चर्चाएं हो, बातचीत हो, और ये जो माहौल है इसको बदला जाए। क्या हो गया फैसल? थिंक उसका कनेक्शन चला गया रजी साहब, आई थिंक। और खान साहब का कनेक्शन आई थिंक हैज गॉन। जी जी, ये बीच में कुछ कट गया था शायद। ओके, जी जी, बैक, यू आर बैक। तो बस मुझे लगता है कि यही अभी आपने जिक्र किया था कि मैं कुछ दिन के लिए जेल में गया था, तो वहां मैं देखता था, क्योंकि वहां मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय मोहब्बत के और सिवाय अपने और मैं हैरत में रह जाता था जब मैं वहां देखता था कि मोहब्बत हर बार वहां जीतती थी। तो
और जेल का जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का हो सकता है, वो आप खूब आप जान सकते हैं, हम लोग आजकल सुनते रहते हैं। लेकिन मैं देखता था मतलब मैं शुरू में मुझे बहुत छुपा के रख रहे थे, मुझे हॉस्पिटल में पहले भर्ती किया था, फिर वहां से जब जेल ले गए थे तो बहुत छुपा के ले गए थे। तो दिल्ली में हमारे जो वॉलंटियर और घर वाले, उनको भी पता नहीं था कि अब मैं हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट हो गया। लेकिन शुरू, और इस वजह से, क्योंकि इन लोग को ये खबर नहीं थी कि अब मैं हॉस्पिटल से जेल चला गया, तो मेरे सामान पहुंचने में, मेरे पैसे पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लग गया था। तो उस 1 हफ्ते में मैंने देखा कैसे मेरे मेरे कपड़ों का इंतजाम, मेरे नहाने के साबुन का इंतजाम, मेरे खाने का इंतजाम, मेरे लिए चाय का इंतजाम कैसे लोग करते थे। और तो हम लोग जो इस वक्त कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि खासतौर से नौजवानों को, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब नौजवानों को नफरत फैलाने के लिए तैयार किया जा सकता है, तो मोहब्बत फैलाने के लिए क्यों नहीं तैयार किया जा सकता है। हाँ, कमी हमारे समझाने में है। जो मुझे आप मुझसे कहेंगे जो सबसे जरूरी मुझे जो लगती है, कुछ बड़ी कमियां हैं जो मुझे लगती हैं, उसका कोई बहुत फायदा नहीं होता है कमियों का, लेकिन उसमें लगती है कि हम लोगों की जुबान तक लोगों की जुबान में उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम अपने इंटेलेक्चुअल, अपने लेवल की बात करते हैं और अवाम हमारी बात को समझ भी नहीं पाता है। एक जगह मुझे याद है, मैं एक बहुत इंटेलेक्चुअल मीटिंग में अपने एक दोस्त को ले गया, जो एक डॉक्टर साहब हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं समाज में बदलने का। तो वो मीटिंग से बाहर निकले, बोले कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है? बोले देखिए, आप लोग की बातें तो बहुत अच्छी है, ये काम भी बहुत जरूरी है, और लेकिन कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हम अवाम की सतह तक जाके अगर उनको समझाएंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात ऐसे ही लगे, उनको ना लगे कि ये बहुत ही कोई संजीदगी की बात है। लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर लोगों को, खास तौर से नौजवानों को टारगेट करके अगर हम सही तरीके से उन तक बात पहुंचाएं। अभी आपने देखा जहांगीरपुरी में, जितनी जल्दी जहांगीरपुरी रिकवर हुआ है, मैं खुद मतलब हैरत में हूं। इतनी जल्दी मैंने कोई दंगा पीड़ित एरिया, मैं 25 साल से काम कर रहा हूं दंगा के प्रभावित इलाकों में, लेकिन मैंने कोई इलाका इतनी जल्दी रिकवर होने नहीं देखा कि चौथे दिन दोनों कम्युनिटी बड़े लेवल पे निकल के तिरंगा यात्रा लेके निकल गए, और उसमें उनके स्लोगन देखने के लायक थे। वहां कोई संगठन नहीं था, वहां कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, वहां के लोकल नौजवानों ने कहा, हिंदू नौजवान कह रहे थे हम मुसलमान नौजवानों के बिना नहीं रहेंगे, हम तो खाते हैं इनके संगे, तुम हमें क्यों इनसे लड़वाते हो। तो जितनी जल्दी जहांगीरपुरी रिकवर हुआ, बाकी एरिया में मेरा ज्यादा खरगोन वगैरह में अभी संपर्क हुआ, लेकिन मैं उसको नहीं जानता। तो अवाम जितनी जल्दी ये समझ जाएगा कि ये नफरत हमारे, और ये नफरत तो धर्म के भी विरुद्ध है। मिलय न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। धर्म का बुनियादी मकसद जो है वो मोहब्बत को प्रोपोगेट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको फैलाना है। तो ये अगर हम उनको बतलाएं, मैं अभी बात कर रहा था तो मैंने वहाँ बहुत से ऐसे लोग भी थे जो हमारी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। उसमें मतलब आधे ऐसे लोग थे जो विरोधी होंगे। तो लेकिन जब मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा भैया देखिए, दया धर्म का मूल है। मतलब आप मजहब के नाम पे क्या करना चाहते हैं? क्या आप हॉस्पिटल में लोगों को मारने की बात करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर इस रास्ते से हम बात करें, हालात के बारे में मैं ज्यादा तस्करा नहीं करूंगा, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस ग्लोबल दुनिया में हर खबर एक दूसरे को पता है। लेकिन उनको संभाला कैसे जाए, तो उसके संभालने का रास्ता यही है कि हम मतलब हम, लेकिन उसके लिए हम में दीवानगी चाहिए। ये किसी प्रोजेक्ट का काम नहीं है। अगर हम इसको प्रोजेक्ट बना के हम इसको किसी कोई प्रेजेंटेशन टाइप करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ये तो दिल से, गांधी की तरह। आप सोचिए कि एक आदमी मर जाता है। मैं अक्सर 30 जनवरी जाता हूँ जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी, उस कमरे को देखता हूँ, उन कदमों को, अभी वो पत्थर के कदम बना दिए हैं, वो पांव बना दिए हैं जहां से गांधी जी उठे थे और प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। मैं देखता हूं कि एक आदमी इस हद तक किसी अपने मकसद के लिए उसकी दीवानगी हो सकती है कि वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा सकता है। तो ये जो काम जिंदगियों पे को दांव पे लगा के होता हो,
आप उसको समझें कि कोई सेमिनार से हो जाएगा, किसी प्रेजेंटेशन से हो जाएगा, किसी किताब के लिख ले। हाँ, लोग लिखेंगे, हम कर जाएं अपना काम, लोग हमारा प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारी किताब लिखेंगे, हमारे तज़किरे करेंगे। तो ये काम जो है वो, अभी मैं देख रहा था 10 दिन पहले नसरुद्दीन चिराग दिल्ली के उर्स में, रोशन चिराग के उर्स में हिंदू ज्यादा थे। मैं हैरत में रह रहा था, और पहली बार उर्स में ऐसा था कि बहुत पुलिस फोर्स लगाया था, क्योंकि उससे 2 दिन पहले जहांगीरपुरी हो चुका था। तो मैं हैरत में रह रहा था कि वहां सजदा करने वाले सब, मैं पूछता था उन नौजवानों से कि आप कह रहे हाँ, अरे हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो ये मोहब्बत आप देखिए, 785 साल हो गए, 785 ईयर्स हो गए, लेकिन उनकी रोशनी, उनकी मोहब्बत आज भी उसी तरह से काम कर रही है। तो मेरा मानना ये है, और हमारे सबका घर में भी यही होता है। आप देख लीजिए, वहाँ वो स्वामी जी आए थे उस दिन, हमारा जो इफ्तार था उसमें स्वामी नारायण दास वृंदावन से, उनकी आंखों में आंसू में देख रहा था इस माहौल को लेके। तो यही सब बस, और मैं इससे मतलब जो हम काम कर रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा यूथ इंटरेक्शन, यूथ को इन्वॉल्व करना सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे तरीकों से, और उनको ये हम बता रहे। और हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम सुने, अगर हम कहें और लोगों के दिल को चोट करें, हमारी बात में केवल आंकड़े नहीं हो, हमारी बात किसी के आंसू अगर निकलवा सकती है। मैं जब देखता हूँ लोग ताली बजा रहे हैं तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं होती है, लेकिन जब देखता हूँ कि मजमे में लोगों की आंखों से भी कोई आंसू निकल रहे हैं, जब हम लोग लोगों के बीच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। और लोग मुझे लगता है, देखिए हम तो धार्मिक आदमी है, तो हमें लगता है कि बनाया तो इंसान को अल्लाह ताला ने है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में मोहब्बत की चीज तो है। अब यह है कि हमें उसको बाहर लाना है, और जितनी ताकत से हम बाहर ले आएंगे, तो वो मुझे लगता है कि उतनी ताकत से वो लोग उसको समझें, और समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। देखिए नफरत की, संदीप पांडे जी ही कहते हैं कि नफरत की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो सस्टेन नहीं करती है, उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जैसे चाय का कप है, आपके हाथ में भी ठंडा होगा, मेरे हाथ में भी ठंडा होगा, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में भी ठंडा होगा, प्रेसिडेंट के हाथ में भी ठंडा होगा, उसको गर्म, वो गर्म एक समय के बाद नहीं रहेगा। तो नफरत, अब इसीलिए आप देखते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नया मुद्दा लाते, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे। अब आप गुड़गांव की नमाज का आपको पता है, कल ही मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई गुड़गांव की नमाज कहाँ गई? वो कह रहे बढ़िया हो रही है, वहां कोई दिक्कत नहीं। तो और अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने ऐसा लगता था कि गुड़गांव की नमाज के अलावा इस मुल्क में कोई मसला ही नहीं, और इतनी जल्दी, मतलब एक महीना नहीं लगा कि आज गुड़गांव नमाज का कोई जिक्र नहीं है, तो अब दूसरा मुद्दा आ गया। तो लेकिन इसका इलाज, इसका क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, हम उनसे ज्यादा, हम उनके लेवल पे जाके इसका जवाब नहीं देंगे। और हम आज भी कहते हैं कि हम उनके हमदर्द हैं, हम नफरत फैलाने वालों को मरीज समझते हैं। और अब देखिए होम्योपैथी में तो इसके लिए दवाएं उन्होंने बताई हैं कि नफरत के लिए कई दवाएं हैं जिनको खाने से ये खत्म हो जाती है। तो हम इनको पैथोलॉजी, हम इनको बीमार लोग मानते हैं, और किसी भी बीमार के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है। तो हम, और ये सच में आप देख लीजिए, एक स्टडी की थी हिंदुस्तान में किसी ने, कि वो एक 20 ऐसे नौजवानों की उन्होंने कहा जो नफरत की चीजों में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हैं, और इनके साथ बचपन में हिंसा हुई है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कभी भी, मैं नहीं मान सकता हूं, मैं देखिए ऐसे ही घूमता हूं, मैं विजिबल मुसलमान हूं, मतलब 2 तरह के मुसलमान आप मान ले, तो मैं तो 24 घंटे बाहर रहता हूँ, मेरे साथ कोई पुलिस नहीं रहती है। मेरे साथ तो कभी कभी मेरे वॉलंटियर भी कहते हैं कि अरे, तो मैं कहता होगा कुछ नहीं। इसमें भी एक मजा है कि अगर कोई हमें था, और मैं इंतजार में रहता हूँ कि कोई पीछे से टोपी नोच लेगा आजकल। हाँ हो सकता है कोई कुर्ता, अच्छा हमारे कपड़े भी ऐसे हैं कि आप उनको इजिली खींच भी सकते हैं। तो मुझे हर वक्त ये अंदेशा रहता है, आजकल मैं पीछे भी देखता रहता हूँ, लेकिन कभी नहीं होता है। तो अब ये है कि इतना विश्वास है, इसीलिए मुझे लगता है हम काम कर रहे हैं। वरना आजकल आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मतलब डिप्रेस्ड होके बैठ गए, वो कह रहे हैं आप कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ कि नहीं, कुछ नहीं होगा, हमें तो यही करते रहना है। और गांधी जी ने भी एक बार पटना में कहा था कि अवाम की अदालत में हमें जाना चाहिए। जब हमारे सारे रास्ते हमें बंद लगे कि अब हमें कुछ नहीं होता दिख रहा है,
तो हमें अवाम की अदालत में ही जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है काफी बात हो गई मैंने कहा। बड़ी बड़ी जल्दी खत्म कर दिया आपने इतना प्रैक्टिकल हो गए कि कुछ और आगे बढ़े नहीं। आपको अभी सब क्वेश्चन आंसर में लंबा खींचेंगे। आई थिंक लेट्स hear Sandeep Saab, and maybe he should just briefly summarize this in English, what Faisal Khan Saab has said. And then maybe you both converse also, ki what is the prescription that is really in our mind, you know. Okay, Sandeep ji. Okay, thank you, Razi bhai, and welcome to everybody. I'm very happy to see, so many of you who have joined this discussion on such an important matter. And as Faisal has said, these days, this is probably the only thing that, we are discussing, how to tackle this situation. And we are trying our best to organize programs. I'm just back from a iftar, a very special kind of iftar, which was organized by the Hindu-Muslim Unity Committee of my Socialist Party, where we had organized it in a way so that the Hindus would bring all the food, and the Muslims will break their fast with that food, and then they will jointly organize the iftar. So we are constantly occupied with this. Faisal said that he has attended 30 or 40 meetings in the last the phase in which communal violence and the use of bulldozer has now become a common thing in India. Bulldozer has become a symbol of governance, and violating the law of the land, without even serving notice to people, and sometimes demolishing buildings which are built as part of government schemes. Like one of the houses which was demolished in Madhya Pradesh was actually built from the funds of PM housing scheme. So they do not even care to see what they are demolishing, just in blinded by a politics of communalism, a politics of polarization. They are indulging in things which are obviously against the constitution of this country, against the law of the land, and they have vitiated the entire atmosphere. So in such an atmosphere, we are here today to discuss how to tackle this situation. And Faisal has described the way he deals with communal violence, hatred, and such things. Faisal's strength is that he talks about love. He talks about harmony. He can recite Quran as eloquently as he can, recite Ramcharitmanas, and he speaks a language which is difficult for people who may be opposed to his viewpoint to oppose him, and that is how he has been successful. He said towards the end that I am not immensely successful, but I am able to take my message to people, and that is important. I am able to engage in dialogue. I am not losing hope like some people are talking about in that manner these days. They say that in India now democracy is over. We are headed towards a Hindu Rashtra. The government in power has usurped the constitution. It has compromised the various institutions.
which could have upheld the values of the constitution, which could have protected democracy. Among them, there are courts, there is the election commission, various investigation agencies, and others. So some people, they are at a loss to decide as to how they should deal with this situation, whereas Faisal is very hopeful. Faisal says that even in this very negative atmosphere, where people may not be willing to listen to you, to listen to the talk of harmony and peace and love, you can take your message, and there are people who will agree with you, who will come along with you, and that is Faisal's strength. He has formed a group. In fact, he has revived Khan Abdul Ghaffar Khan's Khudai Khidmatgaar, and he has a group of youth belonging to all communities, religious communities, and he has set up a Sabka Ghar in Delhi, where they celebrate all festivals, and anybody can come and stay there, and there is an intermingling of people from different culture. Just yesterday, I was at an event in Delhi where people staying in Sabka Ghar had come, and I saw a person from Tamil Nadu. Mr. Dayanand left this meeting saying that he cannot understand this language. But let me tell you, I have seen in Faisal's team people from Tamil Nadu, people from South India, and people who cannot understand the language, who don't know what is being spoken, but all they know is that this man is talking about harmony and love. So they understand love and harmony, and that is very important. A lot of times when people touch my feet, I say I don't I don't believe in this, and please don't touch my feet. They say this is a mark of respect. So I tell them that I can, from looking into your eyes, I can tell you whether you have respect for me or not. You don't need to touch my feet. So similarly, there are people who are not able to follow the language, but they live in Sabka Ghar. I remember we undertook a yatra from Delhi to Assam, in which there were people from South India, and nobody used to communicate with them because they could not understand their language. They could not understand Hindi, but still they were there. And in fact, one of them fell ill and had to be sent back. But one could see that they were part of the group. They knew the larger objective, the mission for which the yatra was being carried out. This is the yatra I'm talking about in 2020, February and March, just before the COVID struck. And this yatra was from Delhi to the detention center in Assam to expose Prime Minister's lie when he said from Ramlila Maidan in Delhi that there are no detention centers in the country. And there was one being constructed right then in Goalpara. And when we reached the West Bengal-Assam border, we were given the orders of the district magistrate of Goalpara, who said that there cannot be any protest outside the under construction detention center. So what the district magistrate of Goalpara was saying in writing, the Prime Minister was denying the fact, in his public speech from Lal Killa, Ramlila Maidan. So there are various events like this which Faisal organizes. He says that he's visibly a Muslim because he wears the skull cap, his beard, and his like the Prime Minister says that from the clothes you can recognize the people who were there behind the rioting during the anti-CA and RC protests. So even after being visibly a Muslim and
carrying out all kinds of yatras in India on cycle, on foot, in vehicles. And he says, I wear clothes, which is, if somebody wants to harass me, you can very visibly, tear my clothes or harass me. And he's mentally prepared for anybody coming from behind and snatching his skull cap or doing something funny with him. But he says that he has never faced any situation of harassment, and he has faith in people. He says that even Gandhi said that when all paths are closed, when you don't have hope from anywhere, then you have to go to the people. So Faisal has used religion. He's my very good friend, and we work together. But the difference is that he is a believer, I am an atheist, and still we are able to work together. And I believe that, if religion can be used to promote harmony, peace, positive values, then it should be used. And that is what Faisal does. And he says that religion is all about love. If you are using religion for violence, for hatred, then it is not really religion. And he also said that these negative emotions do not sustain for very long time. And he gave the example of a hot tea cup. And he also said that it doesn't matter in whose hand it is. It could be in your or my hand, or in the Prime Minister's hand, or the President's hand. But the tea has to ultimately cool down. So it will not remain hot forever. So that is a good analogy, I think. And he says that the negative emotions do not sustain, and ultimately the positive values, emotions will sustain. He says that when he converses with people, he is not happy when they clap, but he is most happy when they are emotionally moved, when they have tears in their eyes, when they see that what is going on, what is being done to the society, they feel sorry for it. They have a feeling of guilt that what is going on, and they are not able to do anything about it. So he mentioned that the example of how namaz in Gurgaon was made such a big issue, as if it was the only issue in front of the country, but where some people were not allowing Muslims to perform namaz at a place. But within few days, people forgot about it, and he has inquired and found out that people are offering namaz at the same place, as normal. So it was probably just a politically motivated event, and it served some political purpose, and then the whole issue died down. He was talking of an Urs, which is an annual celebration, especially on mazars and mazars of Sufi saints. And he mentioned one Urs which is 785 years old. And he said that when he went there, he found it was mostly Hindus who were going to this mazar. And that is the reality of this country, that Hindus and Muslims both go to pay their obeisance to mazar and offer their prayer. And even after all the polarization and the communal politics which has taken hold of this country, so much that in the recent elections we saw how people voted, and unexpectedly they have voted back a party which we thought would not be able to win. And there are people like me who feel that the whole process has been manipulated, but then there are also people who think that that real polarization has taken place in the society,
and the situation seems to be beyond repair at this point. But then, people like us cannot sit at home, because when as one of my mentors used to say, that when there is fire outside, how can we sit? We have to take the water to douse that fire. So people like me and Faisal and many others, including a lot of you here, the very fact that we are discussing this and so many people are attending it shows that we are concerned about the situation and we want to do something about it. So all of us are collectively working to diffuse the situation, to decommunalize the society, to strengthen the tradition of communal harmony and peace and love and good neighborly relations. I feel very happy that even today there is a Muslim family in my colony, Indranagar in Lucknow, who every Ramzan will send a tray to our house of eatable items in the evening when they are about to break their roza, and 1 or 2 days later, the tray will go back to their house, with eatable items from my house. So unfortunately, there is only one Muslim household which does it, even though there are 4 or 5 Muslim families who live in the neighborhood. But even that one is there, and that is the hope. So, these are the rich traditions of the Indian society. We have not yet become like Gujarat, where Hindus and Muslims are totally segregated. Where it is impossible for a Hindu to live among Muslims in a Muslim colony, or for a Muslim to live in a Hindu colony. So fortunately, in Uttar Pradesh and most of the country, the situation has not become so worse, and that I think is the Gujarat model, which the BJP and RSS want to replicate all over India. They may have achieved success to some extent, at least dividing people in their minds, if not physically. But then I think the syncretic traditions of harmony are equally strong, and that is what people like me and Faisal have been trying to strengthen. As I mentioned, we are organizing iftar these days. This is the third iftar which was organized by our group. Many other people are also organizing it, and we have formed a Hindu-Muslim Ekta Samiti, Hindu-Muslim Unity Committee, to organize more such programs even after the Ramzan is over, so that we can come together and work. So I'm sorry, I was supposed to translate, Faisal, but I have been making my own comments also in between. So this is Faisal's translation and my speech combined. And in any case, I and Faisal don't speak very different things, so it was bound to happen. And I'm just continuing, from where Faisal had left. So we are organizing such things, where Hindus and Muslims can come together and strengthen the syncretic traditions. And my experience over the last 2 years, especially since COVID struck, and since we have been organizing relief for the people, has been very positive. I mean, COVID was bad for the country, for the society, and it has broken the back of the economy. People's livelihoods have been adversely affected. We have been paying the fee of children with the support of a lot of people like you, who have been donating money, of children who are studying in schools where their parents cannot pay the fee, because their livelihoods have been adversely affected by the lockdowns during COVID. So Socialist Party organized 23 kitchens in 2020. 12 of them were running in Lucknow, which I was personally involved with. I was visiting these kitchens.
And a very reassuring, fact which emerged from our experience was that a lot of these kitchens, Hindus and Muslims were jointly running. I mean, if there was any discrimination that we saw, it was based on caste. So one of my colleagues, Zeenat, for example, she was preparing food and was serving people in her community where some scheduled caste people were living. So one day I told her that, why are you cooking alone? Why don't you take the help of the people? And why don't you take the help of these stone cutters who belong to the SC community? So she said, no, I will not let them touch my utensils. I will feed them, but I will not let them touch my utensils. And similarly, 20 kilometers outside Lucknow, there is a village, Hardoia, in which this scheduled caste community, the same community, stone cutters, they were cooking the food because they were in larger number. And there was a Muslim family in the village. There were just one or two families. So they were not comfortable coming and eating together with the scheduled caste people. So the lady who was running this kitchen was, so large-hearted that she said that, okay, you don't want to come, you don't come, but I will send the raw food material to your place and you can cook your own food, because there was a time when the market was closed and you could not purchase anything, when the free ration distribution had not started, and people did not have anything to eat at their homes. So the point that I'm trying to make is that people were working together, even though they may be practicing the untouchability of the caste system, but never on the basis of religious divide were they separated. They were helping each other, even overcoming these divisions. So I saw a wonderful example of communal amity among the poor, especially, and I must emphasize that this point, that even today, I think the communal harmony among the poor sections of the Hindu and Muslim society is largely intact. It has not been much hampered by the communal politics. But you do see an effect in the middle class and the educated people. I mean, I'm ashamed that I have relatives who will tell me that in spite of everything bad that the Bharatiya Janata Party is doing, at least they are anti-Muslim, as if that is a that is a good enough reason to support that party and to vote that party. So I'm really ashamed that among educated people, among people who are doctors and engineers and managers and professors and government officials are the worst. The bureaucracy has been communalized, and that is why this party is in power. One reason which somebody told me after the UP elections, that why the UP police wanted the BJP to be back in power, because they were afraid that if Samajwadi Party would come in power, then the Samajwadi Party activists would not let them, function without hindrance. They would be interfering in their work. But the Bharatiya Janata Party gives them a free hand. And that is why you see that there are so many encounters in Uttar Pradesh. In 5 years of Yogi Adityanath's rule, 125 people have been shot dead. Yogi Adityanath has a Thok Do policy. He says, he doesn't even have the sense that there is a separation of judiciary and legislature. He says that I will kill the criminals. Somebody has to tell him that as chief minister, you can make only policies. Your police cannot kill people. The judge has to award a death sentence to somebody to kill him. But his police is trigger happy. They have killed more than 125 people.
and they have injured thousands, and so many false cases have been filed against people. Siddiq Kappan, the journalist from Kerala, is still in jail. We don't know what his crime is. And Dr. Kafil Khan is fortunately out of jail, but we never know when a case will be filed against him and he will be back in jail. So people have been, you know, unfairly targeted because of their religion, because of their caste, and just because they are in opposition. Politicians, Muslim politicians, have been especially targeted. The bulldozers were actually, which have now become a visible symbol of governance in almost all BJP ruled states, were actually first used against the Muslim politicians to bulldoze down their houses. And even when the first time bulldozer was used by Yogi, I had sent a comment on Twitter that when Nitish Kumar had to take an action against a corrupt IAS officer, he seized the house, but he started a school in that house. And when Yogi Adityanath had to take an action against a corrupt politician or against a mafia, he bulldozed the house. But unfortunately, people are not distinguishing between such actions. They are being fed a communal politics, which they support, and harsher the action, the more support is generated for people like Yogi Adityanath. That is very worrisome, very, very dangerous. But we hope that this is just a phase where people have been misled, and people will realize one day, I am sure, that religion is being used for politics, and this is now how it should be. And as Faisal says, the true message of religion is love and harmony, and a society in which people have respect for each other. And when that true message, when people will realize that they are straying away from that path and are being misled only for political purposes, then people will stop supporting such political party, and will stop condoning the actions of this party. But that is only a hope. The reality is that we are not in a situation where we can influence things to an extent where because so long as they are in power, I think this game will go on. I mean, the only situation where we see that this game of communal politics will subside is when they are out of power. And there we are at a loss, because they seem to have captured the entire machinery in such a manner that it has become very difficult to displace them from power, except for the West Bengal elections, where they were decisively beaten by Trinamool Congress. There have been hardly any success stories from around the country. There was one in Maharashtra, but even in Maharashtra, you never know when the BJP can come back to power by some mischievous, tricks. I mean, they have to be removed from power. Otherwise, there is no way that we can counter this communal politics. And so, but how do we do that? That seems to be a very difficult task. But we also realize that we have to continuously keep working towards that objective, because if there are no people who are opposing them,
then we have no hope. And if we can keep that hope alive, if we can constantly keep fighting against these communal forces, then at least a hope is alive. And there will be some day when people looking for change will hopefully, change the people in power and bring people who are saner, who respect the constitution of this country, who respect the values of the freedom struggle of this country, who respect Mahatma Gandhi, who respect the culture of secularism, the syncretic traditions, the communal harmony, and the bondage between human beings which exists in society, the so-called Tana Bana of society, the Ganga Jamuni Tehjeeb, and then we will be back on the right path. And we hope that that day will arrive sooner than later. With that hope, we continue to work continuously, and all of us are together in that journey. And now this is where I would like more people to come in and have an interaction where you can give your comments, and you can also ask questions to Faisal and me if you like, or you're welcome to say whatever you would like to say. We can open it up for an interaction now. Razi bhai. Thank you, Sandeep Saab. Thank you, Faisal Saab. And next phase is actually a question and answer session that will be moderated by our host, Rafat Hussain Saab. But before that here is coming week's event, which will be a totally different one. We have been very serious for a long time. People need a little bit change in their lives. Ramadan is over. So this is post-Ramadan Eid Milan function. So we do only naturally virtual. So this will be a Eid Milan musical blast. We have got a wonderful, wonderful artist from Delhi who is a national artist actually. He's blind, I think he's blind also. And he will be supported by our own Abdul Rahman and Preeti Govindaraj. But Divakar is going to be our artist for the coming week. So let's back to the question and answer session. And over to Rafat. And don't forget, Faisal Khan Saab, in your question and answer session, you must also display your power of equally comfortable in reciting a Gita versus Quran and giving some meaning. That is also a big message to our audience, which is a lot of non-Muslims and Muslims together. Thank you very much. Over to Rafat. Thank you, Razi Bhai, and thank you both the speakers, Sandeep Pandey Saab and Faisal Khan for telling us about the current situation in India and the hope we have for a better India. So the session is open for question and answer, and you can raise your digital hand or show your interest in the chat. So first person is Satyanath Chaudhary Saab. Please go ahead, unmute yourself. Thank you. It was very enlightening discussion, and I appreciate the fact that Sandeep ji had mentioned that ultimately what it boils down to, somehow we have to dislodge BJP and Sangh Parivar from power, because even if they don't have really the majority support, which is shown in the elections, like only 40%,
But with that 40%, they are able to capture more than 60% of the seats of power. And once they are in power, they can vitiate the atmosphere any way they like. One thing I was thinking is that people who have not tasted power, who have never been in power, are really hungry for जातीय भागीदारी की उनमें भूख है. They want their caste names to be sharing power equitably at all levels of power. And this fact, actually BJP has recognized it and taken help of this fact. And so whenever some other party like the Samajwadi Party is in power, unfortunately what they do is that, okay, then the Yadavas become the royal jati, and they give more power to the Yadavas, some token of power to Muslims, and the rest are almost forgotten. Satina Saab, thank you so much. Sorry for interruption. Please come to the question. Okay. So the last thing is that I feel that all organizations, religious, political as well as social, or even if it is religious, they should try to involve people from all spectrum of society and make conscious effort to bring them into their organization at various levels of power. And then only people will be able to look at it, at the organization as something that is open to all, and they would like to join. So that's my last comment. And it's not a question, but a suggestion. Thank you very much. Thank you, Satina Saab. Either of you wanted to make any comment? This is a prescription, he said. Sandeep Saab, or you agree with that? No, I agree with what Satina Bhai is saying. Thank you. Thank you, Satina Saab. Faisal Khan Saab. बिल्कुल उन्होंने जो कहा है वो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, और जो सबसे लास्ट में जो कहा वो बहुत जरूरी है, और वो हमें सारे इस तरह के सेक्शंस में सिविल सोसाइटी में हिंदुस्तान की, क्योंकि वो एक बहुत अजीब सा, उससे मैं बहुत ज्यादा उस पर कहूँ तो सही नहीं होगा, लेकिन उसमें नुमाइंदगी बहुत खराब रही है. मतलब मैं तो कहता हूँ बीजेपी से भी ज्यादा खराब कोशिश की है. उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना खराब है जिसका नतीजा आज हम भोग रहे हैं कि वो सिविल सोसाइटी दिन पे दिन उसकी अहमियत खत्म होती जा रही है. तो जितना जल्दी ये हम इसको कर लें वो हमारे लिए बेहतर होगा. Thank you. Fazlur Rahman Khan Saab. Thank you, Rafat, for the opportunity to ask question. It's such a vast subject and so many things comes in mind, but in the interest of time, I will be very brief. The point is that invoking Gandhi, it's always good to be positive, of course, and there is always hope. But invoking Gandhi, keep in mind that he was trying to bring Indians against foreigners. And however difficult that was, it was still easier relatively. Now you are going against BJP or RSS or that kind of organization, where majority thinks that Muslims are foreigners.
And therefore, it is more difficult task to convince the majority to love, as Sandeep ji said, that middle class itself feels that, at least, and this is a very popular slogan among middle class, that kuch bhi ho miyo ko theek kar dege BJP jo hai. And that's the crux of this whole thing. So my question actually is that, based on what is happening there, even with the hope, do you think that India is moving towards genocide, or the very least pogrom? Fazlur Khan Saab, a lot of people are, they are apprehensive that that such a situation could arise, and we have seen such a situation in at the time of partition. I and Faisal had carried out a Padyatra from Delhi to Multan in 2005. And when we were walking through the villages of, we were allowed to walk only in the Indian side. On the Pakistani side, we went by vehicles. So when we were walking on the Indian side, in some villages in Punjab and Haryana, people told us what had happened during partition. And they admitted, they said, we butchered our own neighbors, people who we used to call uncles and by other names, and we filled this well with dead bodies. But today we regret that whatever we did, it was not right. So there was a genocide which happened in this country when communal frenzy took over people, and people in large numbers were killed on both sides. So we cannot rule out that possibility, but I also feel that now because there will be no situation where people can be forced out to go somewhere, even though the BJP says that the Muslims should go to Pakistan, or the whole exercise of for example, NRC, which was carried out in Assam, in a population of 3.2 or 3 crores, they were able to find 19 lakh people who did not have any documents to prove that they were Indian citizens. Now, it is very interesting that BJP had carried out this exercise thinking that the majority of the people who will be left out of NRC will be Muslims who would have come from Bangladesh at some point in time. But quite contrary to their expectation, there were only 4 or 5 lakh Muslims, and the rest were Hindus. And that is why they had to bring the Citizenship Amendment Act, where they said that any non-Muslim would be made the citizen of this country easily. Yes. But Muslims will be left out. So the question is that even if you have these 4 or 5 lakh people who have been left out, who are Muslims, who you will not give Indian citizenship, you will probably keep them in detention center. But even in detention center, you can keep them for 3 years. What will happen after that? When they have completed their period in detention center and they come out, what will you do with them? Because Bangladesh is not going to take them back. Bangladesh is saying that they have to prove that they are Bangladeshi citizens before we take them back. So when we talk informally to people in Assam, the same people who will say that the foreigners must go out, when we speak to them privately, everybody admits that that is not a solution. People cannot be sent back to Bangladesh or to outside Assam. So I think that because we will not have a situation like partition, we will not probably see genocide.
and the BJP has also been careful because they also like to cultivate this image that wherever they are in power there are no communal riots. This is one of their biggest claims. So I think they will only use violence to an extent where they can polarize, like the recent violence that we saw during Ram Navami and Hanuman Jayanti celebrations, and then they used bulldozers. So I think they will use violence to polarize the society. But I don't think a genocide like situation will happen. I think we are far evolved, and I think BJP is also very smart. I don't think the BJP would like to see such a problem at hand for which it may be cornered internally as well as externally. So I don't think that that a genocide like thing will happen, but they will continue to keep repeating incidents of lynching, harassing people for love jihad, people who will be accused of killing cows, or something or the other, just with the whole purpose of polarizing the votes. Thank you. Faisal Saab, do you want to add something or let's move on? मैं संदीप भाई की बात से एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल में पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर से होम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट उन्होंने हारा है। राजस्थान में हारे हैं, मध्य प्रदेश में हारे हैं, दिल्ली में हारे हैं, तेलंगाना में हारे हैं, सीमांध्रा में हारे हैं, कर्नाटका में हारे हैं, गोवा। तो बहुत कभी कभी विपक्ष देखिए वो मत, और आप उनके नारे को मत भाई, हम भी नारा लगाते हैं, मतलब हम आरएसएस क्या नारा लगाती है, आरएसएस या कोई भी नफरत फैलाने वाला संगठन जो नारा लगाता है वो तो वो लगाएगा ही। हम कहें अरे वो नारा लगाने लगा, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई मोहब्बत का नारा लगाएगा, लेकिन हम भी नारा लगाते। हो सकता है कि हमारा नारा उतना फैलता नहीं है, हमारे नारे का उतना प्रचार नहीं होता है, वो फैलता नहीं है, लेकिन अपोजिशन की नाकामी भी कभी कभी इसकी ये वजह बनती है। वो जैसे कहते हैं हम मियों को सबक देंगे, लेकिन वो मियों को सबक बंगाल में नहीं दे पाए, बिहार में भी नहीं दे पाए जो अभी सिचुएशन हुई है, क्योंकि तेजस्वी कुछ ही सीटों से हारे हैं और वो किस तरह हारे वो सब जानते हैं। और वो तेलंगाना में, सीमांध्रा में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाए। तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। और हमारे लोकल चीजें इतनी मजबूत हैं कि वो अभी इस तरह की, मैं पूछता हूं कि भाई आप चाहते क्या हैं, तो मुझे, और अभी कम्युनल फोर्सेस में भी अब आपस में झगड़ा शुरू हो गया है, एक्सट्रीम और जो मॉडरेट है उनका, जैसे हर तंजीम और हर तहरीक में एक लेवल पे जाके हो जाता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बस डराना ही काफी है, और हमें वायलेंस में अगर हम पड़े तो वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। ये चर्चा भी अब कम्युनल फोर्सेस में आपस में शुरू हो गई। तो इसलिए मैं संदीप भाई की बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। थैंक यू। मुअज्जम साहब प्लीज अनम्यूट। हाँ, तो मैं एक नज़म आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये अरबी में है, शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी की, जो 13th सेंचुरी के बहुत बड़े सूफी मास्टर थे, और ये सेविल इशबिलिया स्पेन में पैदा हुए थे, और दमास्कस में इनका मज़ार है। वहदतुल वजूद, द यूनिटी ऑफ बीइंग का जो फलसफा है, जो अद्वैत से बहुत मिलता जुलता है, नॉन डुअलिटी से। तो उनकी छोटी सी नज़म है, लक़द सारा क़ल्बी क़ाबिलन कुल्ल सूरतिन फमरअन लिग़िज़लानी व दैरुन लिरुहबानी व बैतुन लिऔसानी व कअबतु ताइफी व मुसहफ़ु क़ुरआनी व अलवाहु तौराती फलहुब्बु दीनी व ईमानी
इन्नी तवज्जहत रकाइबुहु फलहुब्बु दीनी व ईमानी। मेरा दिल ढल गया है सूरतों में और शक्लों में, चरागाह बन गया है ये गिजालों की, दायर एक ये बन गया है राहिबों का, और एक मंदिर बुतों का जहां बजता है नाक़ूसे मोहब्बत, और काबा ताइफों का। कभी तो कतबे तौरात है ये, और कभी मुसहफ कुरान का। और मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत दीन है मेरा, जहां चाहें वहां ले जाएं इसके कारवां मुझको। मोहब्बत मेरा ईमान है, मोहब्बत मेरा ईक़ा है। तो ये फैसल खान साहब ने जो फरमाया था, मोहब्बत ही के जरिए दिलों को जीता जा सकता है, और तमाम जंगें मोहब्बत के जरिए ही जीती जा सकती है। मैं एक छोटी दो सॉरी अगर कोई सवाल कर। नहीं बोले 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 बोले। ये लगता था, देखिए इस वक्त अगर आप भी, ये कोई काम मुश्किल नहीं है, और ये सोशल मीडिया पे जो है आप अगर देखें, नफरत मतलब कम्युनल फोर्सेस जिसे हम कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो नफरत कर रहे हैं अगर किसी एक चीज से, तो गंगा जमनी तहजीब है। और गंगा जमनी तहजीब के लिए थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जैसे डॉक्टर कुश कुमार सिंह हैं, वो जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं यहीं पे आके रहूंगा ओखला में जामिया में, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा ठीक है आप रहिए आके, और हमारे साथ जो हमारा सबका घर और एक छोटा सा ऑफिस है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कृष्ण जी की मूर्ति भी लेके आऊंगा और गीता भी लेके आऊंगा। तो गीता से तो हम नहीं, लेकिन कृष्ण जी की जब मूर्ति का उन्होंने कहा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि ओखला है, ओखला में जामिया, और यहाँ रात दिन लोग आते हैं, तो हो सकता है कि किसी को ऑब्जेक्शन हो कि भाई आप अपने घर में मूर्ति रखें। तो मैंने कहा कि आप गीता ले आओ, लेकिन तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप इसको सबका घर मत कहिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सबका है तो फिर आप मुझे अलाउ करिए कि मैं अपनी कृष्ण जी की मूर्ति भी रख सकता हूँ। तो फिर हमें मजबूरी कहना पड़ा। मतलब अगर संदीप पांडे इफ्तार करा रहे हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और अगर फैसल खान कहीं गए बात करने और उन्होंने एक हाथ में धागा बांध लिया, तो फिर हमारी कम्युनिटी से हमें बहुत घबराहट होती है, अरे ये तो एजेंट हो गए, अरे ये तो फलाने हो गए। क्योंकि देखिए डायलॉग आपस में नहीं होगा, डायलॉग करने के लिए आपको जो आपके सामाजिक संगठन है, या मान लो हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरे मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। तो अगर गंगा जमनी तहजीब की मुखालिफत अगर हम करते हैं तो फिर हम कम्युनल हार्मोनी और मोहब्बत की बात नहीं कर सकते। और मेरा मानना तो है अल खल्क़ कुल अल्लाह, मतलब सेकुलर या गंगा जमनी तहजीब, एक हदीस में है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तखल्लक़ू बि अखलाक़ अल्लाह, अल्लाह की तरह अपने अखलाक बनाओ, यानी हवा सबके लिए। मैं एक केरल एक बार गया हुआ था, तो वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लिखा था ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो मैंने कहा आप काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन ये ओनली फॉर मुस्लिम्स हटा दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सूरज में किरण, अगर आप जैसे मानते हो, तो ये कम्युनल हार्मोनी की बात करने वालों को या थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और आगे मूव करना पड़ेगा। अगर हम भी साझी विरासत, साझी संस्कृति से ये डरते कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं साझी संस्कृति या साझी विरासत का मतलब है मजहब को छोड़ देना, ऐसा नहीं है। तो ये बात भी मुझे लगता है कि हमें समझनी पड़ेगी कि साझी संस्कृति या गंगा जमनी तहजीब दोनों तरफ से चलेगी। अगर हम रोजा हमारे, इसीलिए हमने सबका घर जब बनाया तो ये तय किया कि यहाँ ईद मिलादुन नबी भी होगी, दीपावली भी होगी, होली मिलन भी होगा, ईद मिलन भी होगा। अगर हम एक तरफा करते तो फिर वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा और लोग उसकी तरफ, उनका रियल पार्टिसिपेशन जो है, आप ऐसे और ऐसा तो कर सकते हो कि एक सिविल सोसाइटी के लोगों को बुला के गठजोड़ कर लो, लेकिन सही लोग आपके पास नहीं आएंगे जिनको आना चाहिए। Thank you both. Rudranshu Singh, please. Unmute yourself.
Thank you, Rafat Saab. My question is to Sandeep Pandey ji, and it is an unorthodox question. Since he is an IITian, IITs often boast of their intellectual capital, sir, and rightly so. Then how has fanaticism entered the minds of IITians and doctors and highly qualified people? Although it happened in Germany in the Nazi regime, when doctors injected poison into the bodies of the people they didn't like. But how come it has entered the minds of IITians and IIMs, sir? Very good. So, Rudranshu bhai, my answer to your question is that in our country, we don't take education very seriously. I mean, I have, and like me, I think everybody here, or at least most of the people, have experienced the Indian education system and the education system in the United States. And one big difference I saw is that, you know, in India, you study something not because you like it, but because of peer pressure or because your parents wanted you, you know, to study that subject. And that is why even without interest, you know, we are studying something and we complete that degree and start functioning as a professional without having any interest in that profession. And in United States, it is not like that. I mean, you study a particular subject only when you are interested in that. And when you realize that you are not interested in a particular subject, you also change your subject. Or you take a break from studies and do something, you know, go to some other countries and visit and then come back, and then you decide what you want to do with your future. So that is the basic difference. And because of this, I think we are more hypocritical, and we pretend to be something which we are not. So the intellectual tradition in India is not as strong as, for example, in the United States. There is not so much free thinking, you know, and with the BJP coming to power, it is even more restricted now. So people are just, you know, trying to please the government in power or their bosses if they want to keep their job. And anybody who is expressing dissent, who's going against the ideology of the government, is being marginalized, is being suspended, is being thrown out of job, you know. So I think it is this hypocrisy that creeps in the Indian education system, which is responsible for such a dichotomy where we are highly educated, but then, you know, we are influenced by the more popular things, you know, and at this time the right-wing thinking is dominating the popular thinking, and it is no surprise that most of our educated have come under the influence of this thinking. They may be scientists, they may be engineers, they may be doctors, but they don't have scientific temperament. That is the problem, because they were never truly given an opportunity to be rational. They were never encouraged by their teachers to ask questions. You know, most of the professors that I have studied with, you know, they would not encourage asking questions in the class. So that is our problem. There were very few teachers, you know, whom we really enjoyed, you know, studying with. So I think that is the basic problem. Thank you. So Sandeep Saab, fundamental core of the education is to have an open mind. That's why we get the education. Yes. But yes. somehow we are lacking that
in Yes. Indian system. That's what you are saying. Thank you. Yeah, that Manoj atmosphere is Saab- not there. Yeah, Manoj Saab had a question, but he has left now. And one more comment from Faisal Khan Saab, that he says the BJP has succeeded to spread the hate among the majority of the Hindu population. So you guys work on the field. Is it true that majority of the Hindu people are against Muslim, or these are some very hardcore people who protest or involved in violence? What do you see on the ground? Well, I would say that, only, I mean, that was the situation earlier and that is the situation now. There is only a minority of people who are communal, who would hate Muslims, and there will be even fewer who will actually, indulge in violence. For example, in the last few elections, we have seen that the BJP gets about 40% votes in states where it is able to win. Now that is 40% of the polled votes. But if you consider the total number of registered voters, then it gets only less than 25%, votes. So, which means that it is only about 1/4 or less number in society which is supporting the BJP at this point. And there is a section of people who are otherwise not communal, who are just being driven by the wave. They think that there is a wave in favor of BJP and therefore they go and vote for it. But in my view, the kind of people who we are afraid of, I mean afraid in the sense that we fear that they will cause damage to the social fabric, their percentage is still very small. Yeah, it is Okay, not so let me ask in a different way. Is a majority of Hindus are silent supporter of what BJP is doing? Yeah, so as I said, Mr. Dev Sahayam, a retired IAS officer, in a recent article has said that it is still not the majority of Hindus because, as I mentioned, only less than 25% of the registered voters are voting for BJP, right? So, which means that the majority, even if you consider that there are about 20% of Muslims, Christians, and other religions, and all of them put together, then if the Hindu population is about 80%, then even the majority of Hindu population is not with BJP at this time. And even among the BJP supporters, as I said, their so-called core supporters who support them ideologically, there are a lot of people who support BJP for other reasons, some for the economic policies, some because they think they are truly nationalists. They have been misled into believing that BJP is a nationalist party and the other parties are not so nationalist. So they vote for it in the name of nationalism, not necessarily communalism. Thank you. I would say that the people who we are really worried about is between 5 to 10% of Indian society. Thank you. So next person raised hand is Satynath Saab, but I will give a chance after because he is a second. He is asking the question second time. So first is Abdul Jabbar Saab. Thank you very much. Remarkable discussion today. Dr. Sandeep Pandey, even though I could understand the Faisal Saab, but I could really understand the meaning of his mission. So I have two kind of clarifications. I just especially
I don't know, you haven't spoken to the importance of free press in India, also alternative to BJP. So these two things are very important, I think, in terms of how do you counteract the BJP mission to kind of polarize the society. I think I lived through emergency time as a student, 1975, 77. During that time, remarkable things happened in terms of press, trade press. I don't know whether I read only the Indian Express. It seems to be pretty fair, very independent, but I don't know about other media in India. The other things I was, whether you can elaborate on what is the alternative for BJP? Thank you very much. I'm assuming that you're asking political alternative, electoral alternative. The political, moral, everything. Okay, so as I said that, they seem to be, dominant force only because they are in political power. I don't think if they are not in power, they will continue to hold, such a sway over the society. Because being in power, they are able to influence the media, and media is totally, playing to their tunes. Just because they are the ones who can give advertisements, and they also follow strong arm tactics, so they would not allow any news to be published against them. So they have that was the case in the emergency as well. It's Yeah, yeah. even in a more Yeah. drier manner. Yeah. Right? So the difference between emergency and now is that we were at that time facing an individual called Indira Gandhi. At this time, we have an organization. I mean, even today, if you replace Modi with somebody else from BJP, I think it is not going to affect much the flavor of the politics. I mean, it will probably get even worse, because as we are seeing in BJP, the successive leader is more hardcore than the previous one. I mean, at one point in time, Advani was supposed to be more, fundamentalist than Atal Bihari Vajpayee, and then he started appearing moderate in front of Narendra Modi, and Narendra Modi seems to be more moderate than Yogi Adityanath. So things are going to get worse. We have to be prepared for that. And that is why it is difficult to face them, because they are an organization, whereas Indira Gandhi was an individual, and it was easy to launch a movement against her, and she was voted out of power. So I think personally, my opinion is that they have to be politically defeated. Unfortunately, Congress is a national force, but is not in a position to take on BJP, because they don't have a strong visible leadership. I mean, I have no problems with Rahul Gandhi. I think he's a very fine gentleman. He could have been a very good social activist. Unfortunately, he is not turning out to be a good political leader. But if Rahul Gandhi is to take the lead and lead the Congress from front, I think he can be an alternative. But that doesn't look like to be happening at this point. So the only alternative I see is that all these regional parties coming together, the Trinamool Congress, the DMK, the Nationalist Congress Party, the Communist parties if possible, and Aam Aadmi Party could also join, Samajwadi Party, and it will be good if Congress can also join this alliance. If there can be an alliance of all the opposition parties, and if they put up one candidate against BJP, then I am sure that BJP can be defeated, because BJP wins elections with anywhere from 25% to 50% votes.
But if all the opposition parties combine, then it will be difficult for them to win majority of seats. A lot of Also, you don't want to have another experiment, another experiment, yeah, another yeah, party experiment. yeah. Thank you. That doesn't look like happening, because I think now you have regional parties who have their own identities, and each of them is very strong regionally. I don't think they would like to merge their identity in a larger party. So it will be the next best possible thing is an alliance of such leaders, and among themselves they can choose who can lead the country, and that person, could become the prime minister, or they could take rotations. They could take rotations, and they could lead the country by rotation. That experiment has been tried in several states. So there are various options, but I think the alternative to BJP is an alliance of regional political parties. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Satyanath Chaudhary Saab and then Aftab Saab. Yeah, I just wanted to add some my own viewpoint to Yeah, please be brief. Please be brief. Go ahead. To Sandeepji's analysis about IIT and the intellectuals and all that. I feel that education system in India as well as in America, they don't for the professional degrees like engineering and medicine, etc. They don't give enough emphasis to humanities, social sciences, and that's one of the reasons for people who get these big degrees don't have a balanced point of view socially and politically. The second reason for particularly that holds good for India is that these IITs, I've been a student of IIT Kharagpur. Right from the beginning, there have been overabundance of the dominant castes, and among the dominant castes, they viscerally oppose something like a reservation system. They feel that these guys are not fully qualified to attend our classes. Why should they get admitted, and why shouldn't other dominant caste students not get admitted? So, and in that, they get support actually strongly from BJP, and they know that BJP is more committed to oppose a reservation system and all that. And so that gets them into BJP, and then they accept all of the nonsense that it stands for. So that's my kind of sort of analysis about why there is. Yeah, that's right. Thank you. Thank you. Aftab Saab. Aftab Saab. Aftab iPhone. Sorry. Yeah, sorry, actually I was speaking on the mute. Thank you so much. So my question is for Sandeep ji. Sir, it is very, very reassuring that majority of Hindus are not supporter of hate mongers and criminal of humanity, RSS or BJP. But it really actually made me at peace actually. But my question is why there is no public outcry in India about all this heinous crime committed by the BJP and RSS? Thank you. Yeah. Good question. I was. Yeah. Sandeep. Yeah, it is not as if there is no outcry against what the BJP is doing. I think the civil society is doing its best to take on the BJP. Unfortunately, the political parties are not playing their role honestly. I mean, they are giving in to the communal politics, and
they have started peddling soft Hindutva. I mean, now every leader of other political parties, except for probably the communist parties, now they don't want to, lose the Hindu votes, and therefore they don't want to be seen as standing with the Muslims to fight for their rights. So you have Rahul Gandhi visiting temples, Arvind Kejriwal reciting Hanuman Chalisa, Akhilesh Yadav building Parashuram statues, and the most amazing thing is that Mayawati did not herself say, but her main leader of the party, Satish Chand Mishra, said that if BSP comes to power, we will build the Ram Temple. So in such a situation, because civil society doesn't have that kind of strength as the political party. We are small in numbers. We don't have large organizations. We hardly have any cadres, but we do oppose. And that is why you see that at least 15 top intellectuals of the country, 14, they had put 16 top intellectuals of the country in jail. One of them died. One got bail, Sudha Bhardwaj, but still 14 of them in jail now for about 2 to 3 years, which is more than what people were in jail during the emergency. And, cases are filed against people. I personally, got thrown out of my job at BHU, where I was teaching from 2013 as a visiting faculty on a contract basis, half-time. But they didn't allow me to continue there beyond 2.5 years. So in spite of facing all these adverse circumstances, we continue to oppose this communal politics by holding demonstrations, by writing against them, by sending messages on Twitter. Yogi Adityanath has put police in front of my house 3 times since 2019. Twice when I was about to go out to protest on the decision of Kashmir, and once against the CA and NRC. And thrice I have been prevented from going to Ayodhya, because we have an alternative vision of an alternative structure in Ayodhya, a Sarv Dharm Sadbhav center, a multi-faith harmony center. A trust has been formed. I and Faisal Bhai are members of that trust, and I have given the letter to Yogi Adityanath, and I have told him that parallel to your Ram temple, we are going to build one multi-faith harmony center, and we hope that people will make a right decision and will accept that as the future of religious places where people belonging to any faith can go and worship. So we are opposing them, and it is because of such opposition. Recently there were elections in UP, and let me tell you that for 1 year our party was consistently working to raise the issue of stray cattle, which had become harassment for the farmers. They were eating their crops, but no political party was able to say anything on that, because they thought that if they would raise the issue of stray cattle, then BJP would corner them and would present them in bad light as parties supporting cow slaughter. But we took up that issue, and we said that we hold the government responsible, and we said we will tie these cows to Yogi Adityanath's residence. He should feed them because they're eating the farmers' crops. And for 1 year, after consistently working on this issue, from various districts like Barabanki, Unnao, and Hardoi, the neighboring districts of Lucknow, finally the Prime Minister had to say before the 4th phase of UP elections that we will buy the cow dung if BJP comes back to power, so that people can keep the cows tied to their house. And Yogi Adityanath had to say that we will give the farmers 900 rupees per month to feed the cattle, so that they don't let them go away. So
So constantly we have been raising the issues which affect people's lives, and I think it is because of such attempts that the number of seats of BJP has come down. Unfortunately, we were not able to defeat them in the elections, but their number of seats has been reduced, and on the contrary, Samajwadi Party, which was expected to win and did not win, it has got more percentage of votes than it had when it was in power in Uttar Pradesh last time. So it is just a matter of bad luck that Samajwadi Party lost and the BJP was able to win. But we gave them a tough fight, and we hope that in the next election we will be able to defeat them. Thank you. So that was the last question, and let me ask a quick question or two. So PM words have power. Everyone knows that. And our general understanding is that PM remains silent because he wants to condone the violence. Do you have a different genesis or different point of view? Sorry, can you repeat that question? Yeah, I'm asking that PM remains silent against the violence. Because people, general understanding is people think that he wants to condone the violence. So I am asking whether you have a different point of view or you agree with that. No. I agree with that. The entire Sangh Parivar and BJP, they follow one line, and this is a very smart strategy where the PM, because he has an international image, to project himself as a leader who has some international recognition. So that is why he will never say things or do things which will look bad. But of course, if lynching is taking place in his rule, the daylight killing of intellectuals, you remember they started when it was clear that BJP was going to win the Lok Sabha elections in 2014. The first killing took place in 2013 when BJP was rising, its popularity was rising. So all these killings and lynchings and communal riots and everything which has happened during the BJP rule has happened with the tacit approval of the Prime Minister, and how can we forget that this is the same man who was not given visa by the United States for 9 years because he was thought to be responsible for the violence in Gujarat in 2002. So he has a history of violence and he condones violence because that is the only way Sangh Parivar has known to promote its politics. And it all started with the killing of Mahatma Gandhi. And when we talk of Mahatma Gandhi's assassination, we should remember that this organization had tried to kill Mahatma Gandhi about 5 times, if not less. And even before India had got independence. So imagine there is an organization which is trying to kill the most popular leader of the freedom struggle even before India has achieved independence. I mean, how can they even claim themselves to be nationalists? Thank you both. It was a wonderful discussion and beautiful questions. Back to Razi Bhai. That concludes the question and answer session. Yeah, so thank you. Lekin abhi, as I said, that Faisal Khan Sahab should come back and give us a message from both religious scriptures and also try to translate this message into a secular language for audience, and then I can put the last question. मैं बस इतना लास्ट में जो कहा गया, मुझे अब ऐसा लग रहा है जो अभी 2 दिन पहले अयोध्या में एक मस्जिद, 3 मस्जिदों के बाहर जो पर्चे फेंके कुछ लोगों ने, और वो एक हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थे, उस पे जैसे सरकार ने कार्रवाई करी है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये
उनको लग रहा था कि हम कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएं। मतलब हमने जितना उनको काम दिया था उससे ज्यादा अब वो करने लगे। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आदमी किसी चीज की कोई हद कर देता है तो फिर उसको वापस लौटना पड़ता है। तो वो मुझे अब लगने लगा है कि ये बहस अब शुरू हो गई है। और जो आप बार बार कह रहे हैं वो एक नेचुरल बात है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे जो अच्छा डॉक्टर होता वो यही कहता है कि आप अपनी डाइट को सही करिए और अपनी जो रूटीन ऑफ लाइफ है इसको ठीक करिए, आपकी आधी दवा यही है। तो मैं भी यही कहूंगा कि अगर मैं कोई बहुत पेचीदा बातें नहीं करता हूं, मैं पूछता हूं कि बताओ राम, अगर तुम राम के बनना चाहते हो। मैं एक बार उड़ीसा में था तो वहां करीब 150 नौजवान थे और सब हिंदू और सब बहुत अलग अलग तरीके से वैसे आए हुए बैकग्राउंड से। तो मैंने कहा कि आपको राम वाला बनने के लिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, यानी आपको ये मैसेज देना पड़ेगा कि राम का रास्ता तो मोहब्बत का रास्ता है। तो ये मुझे लगता है कि ये रास्ते पे ही चल के हम इनको काट कर सकते हैं। और जो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई इनको कमजोर करने का कोई रास्ता हमारे पास अभी सबसे अहम रास्ता मुझे ये लगता है। और मजहब का बुनियादी खैरुन्नास नास, में छोटी छोटी बातें लोगों से करता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे कामयाब, सबसे बढ़िया आदमी वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो और इसी तरह की मुझे लगता है आम इंसानों को बहुत पेचीदा और बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत आंकड़े वाली बातों की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी बातों से, मोहब्बत की बातों से, अपनेपन की बातों से, और मजहब पे ये सवाल कि मजहब आखिर दुनिया में आया ही क्यों है। तो रामचरितमानस में ही कहा गया है, मिले न रघुपत बिन अनुरागा, किया योग तप ज्ञान विरागा। यानी योग, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य सारी चीजें बेकार है अगर मोहब्बत आपकी जिंदगी में नहीं है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं जिनसे मैंने खुद बदलते हुए लोगों को देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हमें गालियां बक रहे थे और अभी आके वो हमारे साथ में काम करते हैं, अभी आके वो हमारे साथ में बैठते हैं, हमारे साथ में नफरत के ही खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। तो ये उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर हम ये उम्मीद छोड़ देंगे तो मुझे लगता है वही हमारी सबसे बड़ी हार होगी। और हमारी ये जो हमारी मोहब्बत है ये कोई हमारी वीकनेस नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि देखिए, हम अगर होली मिलन कर रहे हैं, हम दिवाली मना रहे हैं, तो आप इसे हमारी कमजोरी मत समझिए। 800 साल पहले निजामुद्दीन औलिया बसंत को सेलिब्रेट करते थे। तो ये मोहब्बत की बात मुझे लगता है इस्लाम ने पहली बुनियादी, आप देखिए काबे की तामीर के बाद सबसे पहली दुआ वबलदिल आमिना, अल्लाह ताला इसको अमन का शहर बना दे। तो पीस के लिए काम करना, पीस को प्रोटेक्ट करना, पीस को प्रोपगेट करना, ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है, जिसको हम अभी कुछ साल पहले तक अगर कोई मुसलमान पीस की बात करे तो उसको थोड़ा कम, मतलब ऐसा समझा जाता था ये पक्का वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि पीस से बड़ी बात इस्लाम की अगर कोई बुनियादी एजेंडा है तो सिर्फ पीस है। तो उसको, हाँ, पहले अगर आप पीस की बात करो, अच्छा आप क्या एनजीओ से हैं, आप क्या, हाँ, बुनियादी बात पीस की है। अल खल्क, हदीस में है कि अल्लाह ताला को वो ला यरहम अल्लाह, ला आपको जानते हैं ला इलाहा, अरबी में ला यरहम अल्लाह वलाकिन यरहमल लिन्नास, जब तक इंसानों पे रहम नहीं करोगे मैं तुम पे रहम नहीं करूंगा। तो जहां बुनियाद ये बना दी गई, आप सूरे नमल में देखिए, एक चींटी के बचाने के लिए अल्लाह ताला, एक एग्जाम्पलरी बात है, या अय्युहन नमल। तो ये बात करना, मुझे लगता है इस्लाम की पीस ही इस्लाम है। तो ये बात जितना जल्दी हम अगर नौजवानों को समझा देंगे। और अभी मैं आज सुबह ही एक हदीस पढ़ रहा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से कि तुम जानते हो अल्लाह ताला तुम्हारे काम में उस वक्त लगते हैं जब तुम दूसरों के काम में लग जाते हो। तो इतना क्लियर कट मैसेज है हमारे यहाँ
लेकिन आप देखेंगे कि इस मुसलमानों का 90% पैसा रिलीजियस सोशल चीजों को या मजहब से समाज को मजबूत करना, मजहब से इंसानियत को मजबूत करना, ये हम लोग से भी बहुत, हमने इसको, इस पैगाम को पहुंचाने में मुझे लगता है बहुत कमी है। मैं तो जब भी कुरान और हदीस खोल के बैठता हूँ, मेरे सामने सिर्फ इंसानियत के इतने ऐसे किस्से आ जाते हैं। और यही आप देख, परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो रामराज आज जिसकी बात हो रही है, तो तुलसीदास ने बताया है कि रामराज होगा कैसा। अब रामराज कैसा होगा ये कोई गुजरात का आदमी तो नहीं बताएगा, कोई राजस्थान का नहीं बताएगा, ये तो तुलसीदास बताएंगे। तो उन्होंने बताया, बैर काहू संग न कोई, राम प्रताप विषमता खोई, यानी नफरत नहीं होगी और गैर बराबरी नहीं होगी। अगर ये दो बुनियादें हैं तो रामराज है। तो अब बताइए, रामराज की बुनियाद आप कह दो कि कोई रामचंद्र जी कोई सोशलिस्ट नहीं थे, या वो कोई उनको कह वो सेकुलर नहीं थे। तो आप ये बात अगर, और ये मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातें जो जैसे कबीर कहते हैं कि वो सभी घास जल जाएंगी दूब, कबीरा छोटे बन रहो जैसे छोटी दूब। तो ये छोटी छोटी बातें ही करके लोगों को मैं देखता हूँ। आप सच बताएंगे कि मैं सुबह से छुट्टी नहीं मिलती है, लाइन लगी रहती है। अब अक्सर लोग कहते हैं लोग हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं। मैंने अपने टाइमिंग्स रखे कि भैया इससे ज्यादा अब मैं 11 बजे तक रात के कैसे बैठ सकता हूँ। लोग चर्चा, और खासतौर से वो मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जिनका कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन वो आज सोशल मीडिया पे नफरत के खिलाफ ऐसे ताकत से लड़ रहे हैं कि मैं हैरत में होता हूँ। और मैं पूछता हूँ कि आपको कहाँ से ये ताकत मिलती है, और उसमें मेजॉरिटी हिंदू लड़कों की है। एक राहुल का मैं कितने नाम लूं, अक्षय चतुर्वेदी इस वक्त एक 22 साल का लड़का गांधी के ऊपर वो जवाब दे रहा है नफरत फैलाने वालों को, जो आप किसी से सोच नहीं सकते। अभी 2 दिन पहले मैं उससे पूछ रहा था, तुम ये कहाँ से इतनी ताकत अपने अंदर लाते हो? चाहे वो राहुल कपूर हो, वो कुश कुमार सिंह हो, मैं लगे रहते हैं ये लोग। लेकिन यही बात है कि हमारी बात उतनी प्रचार और उतनी ताकत से लोगों के बीच नहीं जा रही है। तो आखिरी में भी मुझे लगता है मैं वही कहूंगा कि हमें लोगों तक, हमारी कामयाबी सबसे ज्यादा वो होगी कि हम लोगों तक अपनी बात को किस तरह ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकें। और उसमें दोनों है, गंगा जमनी तहजीब को जो मतलब थोड़ा घबराते तो उनसे दोनों ही लोग हैं। वो समझते गंगा जमनी तहजीब का मतलब होगा तो कहीं मजहब बीच में से हट जाएगा। मुझे लगता है मजहब ही होगा। किसी ने बाबा फरीद के बारे में पूछा, बाबा फरीद मसूद गंज शकर, जिनके 100 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की मुकद्दस किताब है, वो उसमें 100 श्लोक बाबा फरीद के हैं। तो किसी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि बाबा फरीद की सबसे खुसूसी बात क्या थी? तो बोले कि उनकी खानका में आने वालों के बारे में पूछ रहे थे। बोले सबसे ज्यादा उनकी खानका में अगर कोई आते थे तो वो हिंदू लोग आया करते थे, संत और हिंदू, आवाम हिंदू लोग आया करते थे। तो ये मिलने जुलने का रास्ता, ये लोग सिर्फ मोहब्बत से इतना डरते कि वो बड़ी रामलीला मैदान भर देने की किसी उनके खिलाफ रैली से वो इतना नहीं डरते हैं, जितना वो छोटी छोटी मोहब्बत की कोशिशों से, मोहब्बत की बातों से, मोहब्बत की चीजों से डरते हैं। और मैं हैरत में रह जाता हूँ कि मोहब्बत से इतना इनको डर क्यों है। तो ये मुझे लगता है, और वो इसीलिए बांटने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल अपने रास्ते अलग कर लें। लेकिन अभी जैसे मैंने जहांगीरपुरी का कहा था कि मैं सलाम करता हूं जहांगीरपुरी के लोगों को, वो कोई पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप उनसे कहो कि पीस पे 2 मिनट बोल दो तो वो बोल नहीं पाएंगे। आप उनसे कहो कि हो सकता है पीस लिख भी ना पाए, PAC भी उनको नहीं आता है। लेकिन उन्होंने जिस तेजी से वहां वो जो तिरंगा मार्च हुआ है, जिसको मजबूरी में मीडिया को भी दिखाना पड़ा, बाकी तो सोशल मीडिया दिखा रही थी, और उन नौजवानों ने कहा, हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कहा हम तो साथ खाते हैं, तुम हमें क्यों लड़वाना चाहते हो? जितनी जल्दी लोगों के समझ में ये आ जाएगा, और उतना जल्दी मुझे लगता है कि हम इस रास्ते। और चलिए ये इस पे मेरा क्वेश्चन, यही हमारी, अच्छा मेरा अब ये क्वेश्चन आप दोनों से जाते बिल्कुल जो सबसे ज्यादा the biggest problem I face is this:
how we understand what you analyze ki, bahut aasani se propaganda hua and now they got communalized. But how come this tradition since so long, living together and apparently not living in a violent society for hundreds of years, अच्छे खासे great majority of population. First of all, I debate that and I doubt ki what is that majority, because people have a different mindsets also. Even among Muslims, among Hindus, they go with a broad spectrum language. All Hindus are communalized. Is this true? All Hindus are communalized. Which region Hindus are really communalized? What is the percentage? What kind of caste makeup is there? Are Brahmins communalized? Are Dalits communalized? Who are communalized, and whether the BJP win is really based on a communal factor? And also overall, why Hindus, apparently educated middle class or educated class, why they will become communal when apparently there is not really much violence that they have seen against each other? I mean, they have seen Muslims are less in number. They have seen less Muslim students in school and colleges. Every day there is not fighting between Hindus and Muslims. I mean, during the all period. So how come that this became so easy? Aasan kaise ho gaya ki that let's make them communal. Let's make our brother communal. Let's make even Muslim community, let's make Muslims more communal. Or let's make Hindus more communal. How they became more communal? What were the reason for that easy to get them, make them communal? And why in certain areas they couldn't make the same Hindus communal? Why in certain areas they made certain, and which is the really belt where you can work out? The real issue is not entire India. I don't believe Tamil Nadu is communal or Bengal is that communal. Political activism at the time of election is different than real communalism. Is Bengal communal? That communal really? I don't think that Bengal is that communal, but they hate Mamta, so a lot of people are with them. They hate communists, a lot of people are with the other camp. How are communal, how do you really describe this? How many Hindus, which category are really communal? So they hate Muslim, and why they will hate Muslim? Really, it's not that. Sandeep Saab already elaborated that, because he is saying this is a national movement and they think the PM is good for nation. It's not. I'm not arguing with what Sandeep Saab has said. I'm asking because this is a new question. I myself observe actually to Muslim, my own friends, Muslims and Hindus alike. I associate more with Muslims. And I see a lot of Muslims, I do not know how secular they are. Really, I don't know. So I don't know how secular my Hindu friends are. So this is a question of secularism deep in your DNA. Are you really secular, and how secular you are? I mean, if I scratch your skin, I don't see that skin is very deep, secular, like Vipin Tripathi. I don't see it, right? Rajiv bhai, if you ask any Hindu friend, they say, "Oh, I'm asking. I have nothing against no, you." I'm asking. But PM is good for nation. That's their answer. Rafat, I'm asking Faisal Khan, Sandeep Pandey. I'm not discussing. Yeah, that's what I am saying, the same thing, because he already said that the Hindus think he's good Can for. Can I ask? Yeah, of course. I'm saying that you are repeating what. Okay, go ahead, Sandeep Saab. No, I'm not repeating at all. Listen to my question. I'm not repeating at all. I'm asking a question in a different format. I'm not repeating those questions. Yeah, you are asking in a different format, same question. Go ahead. Are you not allowing me to do that? What is the question? What is the problem? I mean, I'm asking a different
theme. I'm asking really who are the communal elements. This is not the same question. In the caste fabrics, who you think in your analysis, which category is communal, real communal? Which category is opportunistically associated with BJP? What are those regions? This was not the question like that. It is an analytical question, step by step. Which region is most communal? How you see Muslims interaction, and whether you see Muslims also as communal in certain areas, because of course they are at the receiving end, so everybody is sympathizing with them. So all these are real questions, because these are bold questions to confront with. All these things are a different theme. So how you analyze this to confront them? That is my question. I mean, broadly speaking, a lot of Muslims will say, oh, BHU is very communal, but that same BHU has a lot of socialist people also. So how do you categorize this thing? आपको BHU की बात पे आपको बता दें रजी साहब कि वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं हमारे दोस्त हैं जी, उनको देखा, अफ्तार करते हुए देखा, उनके ऊपर भी गाली पड़ रही है। अफ्तार में चले गए तो ABVP वाले उनका विरोध कर रहे हैं। जी, I have seen it. और मैंने फिर पता है क्या किया, मैंने उनको एक मेल भेजा कि मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा है। मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इस देश में ईसाई, मुस्लिम, पारसी भी रहते हैं, और जब ये सारे लोग मिल के रहेंगे तभी ये देश मजबूत होगा। ये वो मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, जो हिंदू महासभा में थे, और मतलब जिनको की बीजेपी अपना आइकॉन मानती है, जिनको बीजेपी ने भारत रत्न दिया, वो ये कह के गए। चलिए, तो हमें लगता है कि फैजल आप जवाब देंगे क्या रजी भाई? मुझे भी जब अभी मैं उतना तो ज्यादा वो सब नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये बताया किसी ने, मुझे जो सूचना लोग देते हैं वही मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि ये ट्विटर जो जिसने खरीदा है अभी, तो उसके बाद जितने बड़े बड़े लोग हैं उसमें मोदी जी के जो फॉलोअर हैं वो आधे रह जाएंगे। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों, ये क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वो सब फेक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे लगो तो बस ऐसा लगता है कि अगर ओखला से निकले तो लौट के हम किसी डब्बे में बंद आ रहे होंगे, लिंच जो माहौल है। लेकिन जब जाओ, क्योंकि मैं तो देखिए ऐसे ही पूरा फिरता रहता हूँ, तो एक मतलब मेट्रो में भी जगह दे देते, बैठ जाइए आप। तो ये जैसा बना के उसको पेश करना चाहते हैं बीजेपी, और उसमें मीडिया तो उनके साथ ऐसे लगा हुआ है कि बीजेपी से भी आगे हो गया। अभी देखिए मीडिया के लिए बीजेपी ने एडवाइजरी जारी की है, और वो हम होते हैं कि जब हम अपने छोटे आदमी को इजाजत दे देते हैं तो वो हमसे ज्यादा बन जाता है। वो कहते नहीं है कि चाय से ज्यादा गर्म केतली हो जाती है, तो वो बिल्कुल है। वो जब मैं भी देखता हूँ यार अब तो मतलब अब बाहर निकलने का नहीं रहा, तो ये अपनी बात को झूठ से कहलवाने के लिए, और मीडिया उसमें उनके साथ है, लेकिन बड़ी ताकत। अभी मैंने एक मीटिंग हुई तो उसमें मुझे राम पुनियानी जी ने कहा कि तुम 100 नौजवानों की लिस्ट बनाओ, तो उसमें 85 लड़के हिंदू हैं जो सोशल मीडिया पे बिना किसी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, बिना किसी एनजीओ से जुड़े। मैं खुद ही हैरत में हूँ कि ये मोटिवेट वो कहाँ से हो रहे कि वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। तो ये इसमें आप ये देखिए कि, और आप खुद सोचिए कि अगर सारा समाज सांप्रदायिक हो जाए तो फिर ये ऐसा नहीं होगा, फिर तो एक मतलब एक अजीब और गरीब हालात हो जाएंगे। तो लेकिन ये दिखाना यही चाहते हैं कि सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल सोचना है, बाकी और भी लोग जो इस पे काम कर रहे हैं वो अपना बताएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों हो गए, उसमें तो देखिए मुझे भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमने 2-3 बहुत बड़ी बड़ी चीजें, हमारी सिविल सोसाइटी या जो भी हम उसको कहें, एक तो पार्टिसिपेशन नहीं था बिल्कुल। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई सिविल सोसाइटी में, आप मुसलमानों की हैसियत भी सिविल सोसाइटी में हिंदुस्तान के वैसे ही है। एक ये संदीप भाई वगैरह को छोड़ दें अगर आप,
मतलब कुछ लोगों को तो उनके नजदीक मुसलमान का मतलब विक्टिम होना है, मुसलमान एक्टिविस्ट नहीं हो सकता है। अगर एक्टिविस्ट होंगे तो तुम्हें हम बिल्कुल लाइन पे ला देंगे, तुम्हें बोलने नहीं देंगे, तुम्हारा नाम कटवा देंगे। मतलब वो पॉलिटिक्स जो कांग्रेस बीजेपी में होती है वो ये भी करते हैं। आपको रहना है तो आप विक्टिम रहोगे। तो पूरी आपने कम्युनिटी में से विक्टिम निकाल, हाँ अगर कोई विक्टिम आ जाएगा तो उसका रात दिन उसकी पब्लिक हियरिंग होती रहेगी। तो ये तो एक छोटी सी बात की, क्योंकि वक्त भी अभी बहुत हो गया। तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो सिविल सोसाइटी ने भी किया और हम उन तक नहीं पहुंचे। अभी अब बहुत से ऐसे लोग हो गए जो कहीं भी नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, नहीं मैं वहां नहीं। जब मैं कुंभ में पहली बार डेलीगेशन लेके गया तो मुझे मतलब ऐसा हो गया, तो मैंने कहा बताइए मैं सेकुलरिज्म पढ़ाने पुनियानी जी को जाऊं? संदीप पांडे जी, राम पुनियानी, विपिन कुमार त्रिपाठी, शबनम हाशमी, ये सब बैठ गए और तो इससे तो कुछ नहीं हो। अच्छा, हम लोग बैठ के अपना वक्त जाया करते, क्योंकि कोई किसी के आगे मानने को उसकी तैयार नहीं। हर एक समझता है अरे मुझसे ज्यादा सोशल, मतलब मैं तो कम्युनल हार्मोनी का मसीहा हूँ। तो वो जब मैंने कहा नहीं मैं डेलीगेशन लेके जाऊंगा, और फिर मैंने उसको बैलेंस करने के लिए ये किया कि मैं अजमेर उर्स में भी जाऊंगा। अजमेर उर्स में लाखों आदमी आते हैं, तो मैंने अजमेर उर्स में जाके आरटीआई के बारे में बताया, ये बताया कि तुम्हारे गांव में जॉब कार्ड कैसे मिलेगा, मनरेगा की बात की। और वहां संतों ने मेरे लिए अलग से, हम सबकी जो खुदाई खिदमत डेलीगेशन था उसका पूरा वो रहने का इंतजाम किया, खाने का किया, और वहां हमने अपने पर्चे बांटे, ये किया। तो मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं है कि हम ये सारी बातें बताएं। और ये एक साइंटिफिक बात है कि कोई तो कमी रही होगी। मतलब मरीज के साथ हादसा हुआ तो एक आदमी अस्पताल से जिंदा नहीं लौटा, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो उसका मर्ज इतना लाइलाज हो गया, या दवा में कमी हुई, या उसकी देखरेख में कमी हुई। क्योंकि मतलब कोई भी इंसान, मैं बहुत अभी मैं ये कुटमुट, ये जो मुझे जमुना बेन अवार्ड दिया है, ये बहुत मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मतलब वो आज से पहले किसी मुसलमान को हिंदुस्तान में नहीं दिया। और मैंने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगा, आप इस दौर में मुझे आपने इस अवार्ड के लिए, जिसको जैन इरिगेशन वाले देते हैं और वो आप सब जान लेते जो वहां हालात है। बोले नहीं नहीं, हमने सही आदमी को सिलेक्ट किया। तो मैं, और वहां जिस प्रोग्राम में मैं था वहां कोई मुसलमान नहीं। फैसल साहब प्लीज कंक्लूड बिकॉज़ वी हैव तो क्रॉस्ड बस ओके, बस यही मैं 2 कह रहा था कि बहुत सी चीजें हैं जो हमसे भी हुई हैं जिस वजह से ये चीज, और वो लगातार वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बार बार बात करते हैं वो तो कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। लोगों के जहन में जो है जहर और नफरत घुल ही रही है, तो उसको लेकिन काउंटर करने में हम लोग से बहुत कोताही हुई, इसको हमें मानना चाहिए और उसके लिए मेहनत अपनी शुरू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। Sandeep साहब, that's it, or you want to add few sentences? Otherwise we conclude the session. You are on mute. नहीं, जो रजी साहब का सवाल था उसका मैं एक लाइन में आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं फिर वो बात दोहराऊंगा जो आप कह रहे थे, जो मैं पहले कह चुका हूँ, कि मेरा मानना है कि जो कम्युनल लोग हैं जिनसे हमको डर लगता है, जिनकी हमें चिंता करने की जरूरत है, वो उनका परसेंट तो बहुत कम है। they are very small in number. I mean, the kind of people who Faisal Khan described as pathological, who need actually psychiatric treatment. So those kind of people are very small in percentage. I think the BJP has been able to come to power using very smart tactics. They have, as Satynath Chaudhary ji was saying, they have given representation to various castes and subcastes, and they have very smartly taken their leaders on board. So, for example, in UP, they have tried to ensure that every OBC except for Yadav and every Dalit except for Chamaat, they are with them. They have taken their important leaders, and with their leaders, their vote bank has shifted to BJP. Now, these people are not communal. They are there with BJP because they think they are getting respect in BJP, which they were not getting in Samajwadi Party or Bahujan Samaj Party. So they have acted in a very smart manner. And as I also mentioned, there is a section of people who vote because they think BJP is nationalist, and there is a section of people who think that BJP is good for economy.
because they are in favor of neoliberal economic policies. So these are various reasons. There is not one reason for BJP in power. The use of media is another one. So I will say that the percentage of communal people who are pathological, who we need to be worried about, is very small. But it is because of the smart politics where BJP has been able to bring along various sections of society with it, is the reason for it being in power. But this kind of arrangement may not continue to stay forever. At some point something will go wrong and the things will fall apart, and then people will be looking for a new political alternative. Thank you. Thank you. That's what we are hoping for. And thank you both for working on the ground.